Hello everyone, welcome to Apti Place Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day would be discussed in this session. Let's get started with today's news list. Today is 8th of January. The first topic is India to surpass Japan economy by 2030. We'll see what is the ranking India currently having and what would be the India ranking post 2030. Second, India is set to become hub for antiviral generics. Third, Supreme Court clears path for NEET counselling. The doctors has been protesting in many parts of the country, specifically in Delhi. So we'll see what the Supreme Court has to say in terms of EWS and OBC quotas. The second last is Japan and US expand defense cooperations amid the concern over the Indo-Pacific and the dominance of China. Japan and US is expanding the defense cooperation. The last is an editorial, What Lie Ahead. A very brilliant editorial written in the Indian Express. We'll see the importance and how the roadmap for 2022 is going to be. Apart from this, at the end of this video, there would be some MCQ based questions for practice, and these questions would be based on current affairs so that it can help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Place Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video helpful, do not forget to press a like button. So first news of the day, that is India to surpass Japan in economy by 2030. This particular news is important for General Studies paper 3, Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. So why this remarks has come and which particular survey has reported that India would surpass Japan in terms of economy. So this was done by IHS Market. It's the latest report. It says that India is likely to overtake Japan and India would become Asia's second largest economy by 2030. So this is again an important statement that is coming from a reputed survey, or you can say the organization, that is IHS Market. As per the report, it says that India GDP is also projected to surpass Germany and United Kingdom to rank world thirds. Currently, India is the sixth largest economy. So, present की अगर ranking की बात करें, currently India is the sixth largest economy behind US, China, Japan, Germany, and United Kingdom. Right. So this is something which is very important in terms of improving the overall economic prospects of our country, and it is being anticipated that 2030 में इंडिया के जो एशिया में रैंकिंग होगी वो सेकंड होगी, और अगर बात करें ग्लोबली इंडिया वुड बी थर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. So this is an infograph about top 10 economies in the world. Right? So first is US with almost 19.39 trillion. चाइना की अगर बात करें 12.24 है, फिर जापान फॉलोड बाय जर्मनी, यूके एंड इंडिया इज एट 2.60. राइट. और अगर 10 साल पहले की बात करें, इंडिया की जो जीडीपी थी दैट वाज हाफ ऑफ फ्रांस. राइट. सो अर्लियर इंडिया वाज हाफ ऑफ द फ्रांस टोटल जीडीपी. Now we have achieved, we are almost ahead of France, and India is ranked in basically जो अभी ranking है 6th पे है. We'll see how things is going to improve and post 2030 और 2030 तक ये देखना बहुत अहम होगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है. Now talking about India's nominal GDP, so India's nominal GDP की जो forecast है that is around 2.7 trillion in 2021, and it is anticipated and expected to reach 8.4 trillion by 2030. So this figure is again something very very important for your mains examination. इस तरह के folder point आप जरूर अपने पास रखें. The rapid pace of economic expansions की अगर बात करें, this result in the size of India's जो GDP है वो exceeding है, जापान की GDP भी बढ़ रही है, but we would surpass Japan and would become Asia's second developing economy, right? And by 2030, India's economy would also be larger in size in terms of the Western European economy, चाहे वो जर्मनी की बात हो, फ्रांस की बात हो, and even for the United Kingdoms. Right? For the full fiscal year की बात करें 2021 and 2022, India's real GDP is projected to be around 8.27, but
जो rebounding हुई थी because of the COVID-19 also, the rebounding has not took place at the anticipated pace, but it was 7.3% on year basis. This is what IHS market had to say. And Indian economy is forecasted to grow strongly by 2023 at a pace of 6.7%, right? So इससे ज़्यादा growth भी देखी गई है pre-COVID के time में, but during the COVID, many sectors and many other sectors of the economy was not performing well. Now, this is an anticipation. Let's see how the third COVID wave, basically because of the Omicron variant, we'll see how it is going to impact our economy. Mostly it is being argued कि ये ऐसी variant है जो बहुत ज़्यादा economy से repercussion नहीं करेंगे, but then also we have to be very cautious. Now, industry's contribution की बात करें, which is again very important in terms of the growth and rebounding. So the rapid economic or the consumer market as well as the largest industrial sector make India's increasingly important investment destination. चाहे वो multinational companies हो, बहुत सारे ऐसे sectors है. Specifically अगर तीन sector की बात करूँ, the first being manufacturing, the other is infrastructure and the services. Thus call for more robust development, and these are the sector where multinational companies bring in and bring more FDI into the economy. So government definitely need to focuses upon all these three sector, which has a substantial role to play in the overall economic development. Now, the second important news is again something which is good news for India, that India is set to become hub for antiviral generics, right? So this report has been released, and we'll see what exactly it is all about. This is particularly important for General Studies paper 2, issues related to development and management of health. So according to the rating agency by Fitch Rating Inc, this is an American rating agency, a reputed rating agency, which has forecasted that India would become the second largest global hub for the COVID-19 antiviral generic drug. So this is something which is very important for your examination also. Make sure you remember this type of important points. And why this remark was made by the Fitch Rating Agency, किस concern में उन्होंने कहा है. Basically the concern was, or because the context was that कि जो molnupiravir नई मैन्युफैक्चरिंग ड्रग है जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस दी गई है इंडिया में, after this approval India would become a country which has a capacity of manufacturing and having a large base of market for the generic drugs, right? So India would be the world largest global hub in terms of antiviral drugs and its productions. So increase access to molnupiravir, which is kept for the emergency use authorizations, which is basically aims that will keep hospitalization and death in India at check, और ये मैनेजेबल लेवल पे ओमिक्रॉन इन्फेक्शंस को भी बढ़ने से रोकेंगी, राइट? सो हाउ दिस विल फंक्शन, विल सी दैट ऑल्सो. So what is molnupiravir? How this drug is going to function? This is something a repurposed COVID-19 drug originally developed to treat influenza. ये ऐसी ड्रग नहीं है जो अभी बनाई गई है, ये पहले से ऑपरेशन में है, but it is effective in the COVID-19 also. And it is meant for mild or moderately ill patients जो कि रिस्क में है सीरियस इलनेस को डेवलप करने के लिए. तो वैसे पेशेंट्स में भी जो मोलनुपिराविर ड्रग्स है वो काम करेगी. द पिल, दिस इज अ पिल नॉट अ ड्रग. तो ये पिल है जो कि द फर्स्ट बीइंग यूज्ड फॉर थेरेपेटिक एंड बीइंग डिप्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19. ये पिल एडमिनिस्टर की जाती है द इनिशियल 5 डेज में, जहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शंस हुई है तो वो सीरियस इलनेस से जाने पे रोकती है, राइट? सो इफ अ इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड, he cannot go to the serious illness. He was taking the molnupiravir drugs. And molnupiravir is the first cleared drugs in UK in November, and it was recently also approved in the United States, right? To just give you an idea, India में कौन कौन से ऐसे drugs manufacturers हैं जो इसे manufacture करते हैं. So mercs is a company that is like for the treatment of COVID-19. They are using is for emergency use authorization. Another is Dr. Reddy Laboratories, जो कि मोल फ्लू के नाम से इनको बेचती है. सो दिस इज द पिल इन अ कैप्सूल फॉर्मेट दैट इज बीइंग सोल्ड अक्रॉस इंडिया. ऑथोराइज्ड कंपनी की अगर बात करें, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन रिसेंटली ऑथोराइज्ड बाय द DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किनको अप्रूवल दी है. फर्स्ट बीइंग द डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, सन फार्मा, नेटको फार्मा, वाइट्रिस, हेट्रो ड्रग्स एंड मैनकाइंड फार्मा.
These are some of the most reputed company that would manufacture the emergency use authorization of this pill. And following the authorization, Cipla, Sun Pharma, Dr. Reddy, they are set to release molnupiravir capsules जो है in the coming week in the market, and this can only be given on the doctor recommendations. And this will make India the largest hub for the global antiviral drug in terms of the generic drug productions. Now, the other important news that is Supreme Court cleared the path for NEET counselling. This is also a long debated issue which finally has come to a conclusion after the judgment coming from the Supreme Court. So this particular news is important for General Studies paper 2, structure, organization, function of executive and judiciary. So what Supreme Court has decided, Supreme Court has given a green signal to continue with the counseling for the NEET undergraduate and postgraduate counseling for 2021 and 2022 admissions, which was pending due to some COVID restriction and many other shortfall issues and administrative failures. So the court has upheld कि जो recent reservation policy है जहाँ पे 27% reservation दी जाती है OBCs के बच्चों को and 10% reservation to EWS, that is economically and weaker section of the society, that would continue in accordance with the government previous rules which has released in 29th of July by 2021. ये गवर्नमेंट की ऑर्डर जो रिलीज हुई थी उसी को सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो अप करने की बात कही. द कोर्ट हैज परमिटेड दैट 8 लाख की जो एनुअल इनकम है EWS के लिए, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो थ्रेशोल्ड रहेंगी for NEET PG and UG admission this academic year. Although the session has been delayed, now this would be the time that further course of action को बहुत ही expedite करके जल्दी से जल्द इसको solutions किया जाए. Now, Pandey committee was formed in this regard. This is again something important for your mains examination. If you're writing about the problem that is there, तो आप इसके बारे में जरूर लिखें. So the court has examined the validity of EWS criteria, which was specifically led by the Pandey committee, and it has listed the batch of petitions that were scheduled to be heard in the week of March. Right, आने वाले मार्च महीने में ये शेड्यूल है, पिटिशन को फिर से सुनी जाएगी, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ग्रीन एसेंट की है और एडमिशंस को कंटिन्यू रखने को कहा है. The court has agreed with the government and the Pandey committee recommendations on terms of EWS criteria, which was again released by the government with ये stipulations थी 2019 में नीट एग्जामिनेशन जो होंगे उसमें किस तरह से क्राइटेरिया होंगे. तो अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसी क्राइटेरिया को कंटिन्यू रखने की बात की है, एंड सुप्रीम कोर्ट वांट दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ जो काउंसलिंग की है वो किसी तरह से भी डिरेल ना हो, एंड इट शुड be done at the earliest so that the academic session should start, right? So this is how the news has evolved over the time. We have discussed about the stir that has also continued by the doctor, and this is the final news with regards to the admission and counseling. After this, there would be no dispute that would be coming. We'll see in March what the Supreme Court has to give a clear guideline for future admissions and counseling. Japan, US expand defense cooperation. This particular news is important for General Studies paper 2. Issues and politics policies for developed and developing countries, right? So what US has decided, US के जो Secretary of State हैं उन्होंने decide किया है that he has announced that two nations, that is United States and Japan, would continue their 5-year extension for package that जहाँ पे जो US की troops हैं वो almost 50,000 troops जापान को support करेंगी, assist करेंगी military level, right? So जापान की जो decision आई है, this is in terms of expanding their support to United States also as a allies, उनको support करेंगे क्योंकि जो tensions हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया को लेकर के, so Japan want that it should have a holistic and overall military strength, right? So the new agreement would invest a greater resource to deepen the military readiness and interoperability. टेंशंस की अगर बात करें, जिस तरह से चाइना और जापान ने देखा है अपने बीच में टेंशंस को, उसको देखते हुए जापान has finally agreed that 50,000 US troops would be deployed in Japan region to protect the particular area. Now, Japan US की डील से पहले मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं. We have also discussed जहाँ पे और भी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ डील हुई थी, right? Between the Australia and Japan, there was a deal that also aimed to strengthen their bilateral ties because of the concern that
इंडो पैसिफिक में अभी भी चाइना की डोमिनेंस है। तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान की भी एक एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट हुई है। अब जापान ने यूएस के साथ एक तरह से मिलिट्री डील की है। सो अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट वुड कंटिन्यू टिल 2026, जहाँ पे जापान ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन की एक्सपेंसेस करेगा फॉर द मिलिट्री रिस्पॉन्सेस। And the US has about 55,000 troops in Japan that would have the naval contingent, और ये लार्जेस्ट फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होगी यूएस फोर्सेस की इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम सीमेंटिंग देयर रिलेशनशिप, यूएस और जापान ने ये भी कहा दे आर होपिंग द कॉपरेशंस, जहाँ पे जो चाइना की डोमिनेंस है, जो असर्टिवनेस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कम की जा सके। एंड इट शुड ऑल्सो प्रमोट न्यूट्रलिटी इन द रीजन। इंडिया ऑल्दो हैज ऑल्सो फेवर्ड दैट दिस इज समथिंग विच इज in the spirit where every country has the right to be the part of Indo-Pacific and only China dominance would not be continued, right? तो इंडिया के लिए भी इस तरह के डील्स काफ़ी एडवांटेजेस होंगे, इंडिया के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। कंसर्न ओवर नॉर्थ कोरिया, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने भी रिसेंट में बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया है, दैट हैज रेज्ड कंसर्न बोथ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज फॉर द जापान, एंड इट हैज इंक्रीज द वरी, जहाँ पे रिसेंटली अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने। बोथ यूएस एंड जापान आर एक्सप्लोरिंग द वेज जहाँ पे नॉर्थ कोरिया को नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उसके जो क्लॉजेज हैं, जो रूल्स हैं, उसको एडहर करे, राइट? इवन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज आस्क्ड नॉर्थ कोरिया नॉट टू कंटिन्यू विथ एनी अदर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, बट दे डिड सो, राइट? सो द टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल वाज वाइडली सीन एज अ सिग्नल, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने वापस से जो डीन्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट करने की बात नहीं कही है, एक्चुअल में ऑफिशियली नहीं कही है, बट ये जो इंटेंशंस है वापस से बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट करना, ये अपने आप में काफ़ी है जानने के लिए कि वापस से नॉर्थ कोरिया इस पर्टिकुलर डीन्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम्स या टॉक्स पे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, right? So rather than focusing on boosting and the weapon and arsenal, North Korea would definitely be a country which would not follow the rules and norms, and it would continue to build more and more nuclear arsenal and the ballistic missiles. Now, what lies ahead? This particular editorial has been reported in Indian Express, a brilliant editorial which is written by Sachinand Shukla. He is the chief economist at M&M, and his views are personal. This particular editorial is important for General Studies Paper 3, Inclusive Growth and Issues Arising from It. So what lies ahead in terms of what we'll see that, right? So this editorial has been segregated into 5 important subtopics, that is return of inflation, supply chain and labor shortage, global trade, execution of जो existing policies है उसके बारे में, और इलेक्शन कैलेंडर के बारे में, राइट? तो पूरी एडिटोरियल पे जो थीम है दैट इज फॉर द पेंडेमिक एंड रोड मैप फॉर 2022. So just understand the background. As we know that Omicron, the new variant of COVID-19, which is again a variant of concern, इसको लेकर के काफ़ी बातें हुई हैं, और जिस तरह से पिछले 15 महीनों में इकोनॉमिक रिसेशंस हुई, we have seen the downfall of the economy. Now this particular new variant of Omicron, which has also crippled the new century, you can say the new year of 2022, इसके बारे में जो कंसर्न है कि आगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी या ग्रोथ की क्या डिस्कोर्स रहेगी, उसे इस एडिटोरियल में समझाया गया. सो विल अंडरस्टैंड ईच डिस्कोर्स और ईच इम्प्लीकेशंस अंडर द सब टॉपिक्स. तो पहली बात है रिटर्न ऑफ इन्फ्लेशन की. इफ दिस कंटिन्यूड, द इन्फ्लेशन वुड अगेन कंटिन्यू एंड इट वुड रिटर्न. So inflation has surged to the record level across the major economy. This is not only for India, but major economy has seen the surge in the basically inflations. While most central bank is expected to rise, it is expected to be the transitory phase. और अगर बात करें फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की, where member have brought forward their hike expectations, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी से टाइटनिंग शुरू कर दी है. So India's central bank, that is RBI, would also take some caution in terms of controlling the inflation. Inflation would be the key that would be again in the backtrack by 2022, which could affect the growth prospects. Now supply chain or labor shortage की अगर बात करें, so one reason this is presently high inflation which has disrupted the supply chain also.
और रिस्पॉन्स की अगर बात करें सप्लाई रिस्पॉन्स की, दैट इज मच स्लोअर कंपेयर टू रीबाउंड इन द पोस्ट रीओपनिंग ऑफ द मेजर इकोनॉमी. इवन वी हैव सीन रिसेंट में आपने देखा होगा जिस तरह से टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस हुई थी स्विस कैनाल में एंड इवन इन द कंजेशंस दैट टुक प्लेस इन द लॉस एंजलिस और लॉन्ग बीच. इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है दैट हैज कंटिन्यूड, राइट. So this is again something very important for the year 2022 to see that if any restriction or lockdown continues, this would disrupt the logistic again. Now beside countries ने experience किया है labor shortage की, जो labor force participations हैं वो भी कम हुई है because of the lockdown and restrictions. People are moving away. They're looking forward more to go to their home or the village and not to continue in the mainstream of the cities, right? The evolution of these disruptions through 2022 would play an important role in determining the growth and inflation trajectories. तो ये बहुत ही अहम है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, जिस तरह से बेसिकली पूरी लॉजिस्टिक पॉलिसी काम करेगी, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है अगर उसमें कमी आती है, देन अगेन द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इकोनॉमी वुड बी सीवियरली इम्पैक्टेड. सो वी हैव टू बैलेंस आउट हाउ दिस एक्चुअली फंक्शन. Now, global trade की अगर बात करें, global trade has witnessed a strong rebound in 2021, right? COVID के second wave के बाद we have seen that although the pace has taken place, IMF ने भी अपनी estimations दी थी जहाँ पे growth 10% के आसपास बताई गई है, right? And this plays an important role in supporting the economies. Definitely जब overall global prospects ठीक होती है, हर एक countries की अपनी development में भी सुधार आती है. Indian merchandise exports की अगर बात करें, it has surged up to 41.9% ड्यूरिंग जनवरी एंड नवंबर 2021. और ये जो सर्च थी ये फेवरेबल बेसिस पे थी जहाँ पे कमोडिटी प्राइस हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी है दैट हैज टेकन अ शार्प रिबाउंड इन डिमांड, राइट. सो नाउ वी हैव सी हाउ दिस फैक्टर इज गोइंग टू कंटिन्यू. अगर ये सही तरीके से नहीं हुई, इफ थिंग्स आर नॉट कंट्रोल, इफ द लेबर पार्टिसिपेशन आर नॉट देयर, ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन अगेन इट वुड डिमिनिश इन 2022. And India must focuses on the structural measure to reduce doing the business. जो MSME है उनके लिए काम करने की जरूरत है, because micro small and medium enterprises के जो लोग हैं उन्हें अभी भी they are in the huge NPA. We have discussed our editorial जहाँ पे non performing assets अभी भी जो MSME सेक्टर है उसमें कई ज़्यादा अधिक है और गवर्नमेंट को यहाँ पे फिनेंशियल एड और ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है where the revival of MSME should be pivotal for the government. नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात की गई है. जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, चाहे वो PLI की बात हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, या फिर गति शक्ति जो एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी स्कीम बनाई है, या फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इन सारे को अच्छे से एक रोड मैप देने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, सो दैट दिस इज इम्प्लीमेंटेड एट राइट डायरेक्शन, राइट. तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसकी परफेक्ट एग्जीक्यूशन वुड बी द की और गेम चेंजर, राइट. And these measures would have a potential role in courting the private investment also. So private people, this particular all policies call for the public-private participation, which would give a desired result that is anticipated by the government. And timely execution would be very critical to backstop the growth, right? तो growth को अगर हमें आगे बढ़ानी है तो इन policies की implementations भी बहुत अहम होगी एक Indian economy को road map देने के लिए, right? So this is how the editorial is written about, and very important insights has been given in this editorial. Now talking about election calendar, एक last aspect है election calendar को लेकर के जहाँ पे ये बातें कही गई है. अभी almost 7 states हैं जहाँ पे elections होनी है, particularly 5 states ऐसे हैं जहाँ पे मई के आसपास मई तक इलेक्शन कंक्लूड हो जानी है. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड गुजरात, मणिपुर भी है, गोवा भी है, ऐसे और स्टेट्स में भी होनी है. बट इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं या फिर और भी जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज यू सी इफ़ एनी स्टेट इज़ विटनेसिंग इलेक्शन तो वहाँ पे जो MOC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो इन प्लेस होती है जिसके वजह से ग्रोथ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है. सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट to see the transit, the change in the government, because if election has not been concluded तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगी और वो अगेन एक प्रॉब्लम होगी. फिर देन द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू कंडक्ट अ इलेक्शन पोस्ट कोविड और एनी अदर सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शंस आराम से कंडक्ट हो जाए, रिजल्ट हो जाए, ट्रांजिशन ऑफ पावर हो एंड द ग्रोथ ट्रांजिशन हैज़ टू बी देयर, राइट. सो इलेक्शन कैलेंडर वुड बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर.
and this would be providing a roadmap for the growth for both the central government as well as for the state government. Now moving ahead, we have a prelims test series for you, 60 high quality tests which you can practice same test twice, and the regular performance evaluation for the test would be also provided to you. Along with this, you will get the IS Gazetted magazine for the 12-month subscription. So what you can do, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को लिंक चेक करें, where I provided a dedicated link from where you can directly purchase this course, right? So do check it out. This would be definitely very helpful and essential for you, those who are preparing for the prelims examination 2022. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is B. For second question, the correct option is C. Now, consider the following statement about Financial Action Task Force. The Financial Action Task Force is an intergovernmental body. The objective of FATF is set to standardize and promote effectively implementations of legal, regulatory, and operational framework in combating the money laundering and terror financing. Right? So FATF के बारे में थोड़ी basics भी आप देख लें. करेक्ट आंसर आपको पता है तो जरूर चेक करें. लेट मी नो. और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. नाउ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस दो कंट्रीज के बीच में है? इंडिया मॉरिशस, इंडिया श्रीलंका, इंडिया जापान और इंडिया मालदीव्स. राइट? तो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. आप इसके आंसर्स खुद भी प्रैक्टिस करें और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में इस तरह की बायलैटरल एग्रीमेंट है उसके बारे में देख लें. वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. Right? So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.